Hello and very good afternoon. Welcome to the session on the topic Fertility Enhancing Surgeries by Dr. Seema Sharma. So, the doctor will be sharing all the important details related to the topic today. If you have any doubts, any queries, post that on the comment section. The doctor will take all your doubts and queries by the last of the session. So, stay tuned till the last for all the updates and all the information doctor will be sharing today in the webinar. Now, doctor, you have the stage. Good afternoon, everybody. I have come up with another Facebook Live session. I'm Dr. Seema Sharma, Senior Consultant Ops in Gynae. I'm a Gynae laparoscopic surgeon as well, and Apollo Cradle, Amritsar. So today I'll be discussing fertility enhancing surgeries. So first, to understand what are fertility enhancing surgery, these are the surgery which not only diagnose the cause of infertility, and they also help in improving the fertility issues. So first of all, before we discuss fertility enhancing surgery, we must understand what is infertility. Infertility means if the couple is not able to conceive after regular sexual intercourse for 1 year, at least 1 year, without using any birth control measures. So infertility is a challenge you probably never expected, but patience, support, knowledge can help you deal with it. So next, coming to understand this fertility, we have to little bit understand the physiology of ovulation and how the fertilization occurs. So once the female attains puberty, so it starts the female starts ovulating. Ovulating means uske eggs बनने लग जाते हैं under the influence of hormones. So puberty के बाद every female has menstruation, and in each cycle there is a ovulation. Ovulation is to release the eggs from the ovaries. So उसमें 3-4 eggs mature होते हैं. Out of that, one egg is a dominant egg, dominant follicle. उसमें से egg release होता है, and that egg is picked up by the tubes. And in the tubes, it is, if the patient is married and trying to conceive, so the sperm is moves from vagina to the uterus and then to the tube, and fertilization occurs in the tube. I will show you how this happens. This is the this is uterus, and these are tubes, and this is ovary. So during ovulation, egg is released from the ovary. This is the ovary, and when egg is released, it is picked up by the tube, and sperm travels through the vagina to the cervix to the uterus, and it travels to the tube, and in the tube only fertilization happens. And once the fertilization happens, fertilized egg or embryo is formed, which travels back to the uterus and is implanted in the uterus. This is how the pregnancy happens. And in this process, if something is wrong in any of these pathways, or something is wrong with the sperm or the egg, then patient is not able to conceive. So coming to the causes of infertility. Infertility in the causes, since both the partners are responsible for the conception of for the fertilization, so there's female factor of infertility and a male factor infertility. So today I will discuss only the female factor infertility with relation, and how to improve this fertility part with the help of fertility enhancing surgeries. So coming to the causes in female, what are the causes of infertility in females? Since in every cycle, egg is formed, and egg is then travels to the tube and then is implanted in the uterus. So there are 3 things which are involved. First is the ovary, then tubes, then uterus. Anything happens in 3 of these, then the fertilization is hampered, or fertility is hampered. So coming to first important thing is the ovulation, that is ovulation factor. So once the female starts menstruating and attains puberty, ovulation should happen regularly in every cycle, and female should have a regular cycle of 30 to 35 days.
But if the cycles are irregular or something happens with the ovulation and egg is not formed properly, the ovulation is not right, then it leads to fertility issues, infertility issues. So coming to ovulation factors, so ovulation, in the ovulation today, the most common factor which interferes with the ovulation is the polycystic ovarian disease, that is PCOD. आजकल जो like the PCOD is very common and so is infertility these days, because PCOD का incidence इतना बढ़ गया है. This may be because of the lifestyle changes, more of sedentary nature of work the females are doing, and from the very childhood the children have stopped playing outdoor games. They are most of the time they are sitting and they are playing games on the laptops, TV, and mobile. So this has changed the lifestyle of the younger generation altogether. So plus the eating pattern is also changed. We have left all those things. We are following the West and we are eating more of white flour item, bakery items, and more of sugary thing. So this has led to the hormonal disturbances in the females, and which leads to defective ovulation. So this has led to the higher incidence of polycystic ovarian disease. ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है? इट्स बेसिकली अ न्यूट्रिशनल डिजीज व्हिच मैनिफेस्ट एज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डिफेक्टिव ओव्यूलेशन. इसमें क्या रहता है कि इंसुलिन की खाने के बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव ईटिंग and more of sedentary nature of work, females have tendency to gain weight. They gain lot of weight, और वेट गेन करने से उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, एंड जो उनकी ओवरीज हैं, ओवरीज दे बिकम थोड़ा बल्कि ओवरीज हो जाती है, लार्ज हो जाती है साइज में, एंड उसमें जो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उनके follicles हैं, वो normally 3-4 follicles in every cycle they are formed, and one of them is dominant, which is released. But in this polycystic ovarian disease, what happens is they have 10 to 12 follicles which are placed on the periphery of the ovary, and they are not properly formed, and there is no dominant follicle, और उसमें से egg release नहीं होता. Ultimately क्या होता है कि egg release नहीं होता. एग रिलीज ना होने की वजह से अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इवन इफ एग इज रिलीज, इस क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, बिकॉज कभी तो ये प्रीमेच्योर रप्चर हो जाता है, कभी ये काफी बड़ा साइज का होके रप्चर होता है, कभी इसमें सिस्ट बन जाते हैं. तो सो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज द कॉमनेस्ट दीज डेज. अब इसका क्या हल है? इसके बहुत सारे हम लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं कि करो, वेट रिडक्शन करो, अपना खाने का पैटर्न चेंज करो, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाओ, अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ. डिस्पाइट ऑल दैट, ऑल दोज थिंग्स, समटाइम्स गुड क्वालिटी follicles, good quality egg is never released. So we put the patient on certain medicals जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर होते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, और कुछ वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, जिससे हम पेशेंट का वेट जैसे जैसे रिड्यूस होता है उसकी रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी आती है और एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. बट कुछ केसेस में ऐसे रहता है कि डिस्पाइट ऑल दिस एग रिलीज नहीं होता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन आती है कि हम सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करें. So I will discuss PCOD, how to treat PCOD with fertility, this minimally invasive surgeries. Second factor which leads to defective ovulation is the endometriosis. Endometriotic cyst होते हैं ovaries के अंदर, जिसकी वजह से डिफेक्टिव ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होती. और एंडोमेट्रियोसिस में एक और फैक्टर प्ले करता है कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट बने होते हैं ओवरीज के अंदर. जो चॉकलेट सिस्ट हैं, दे हैव अ चॉकलेटी फ्लूइड विच इज वेरी स्टिकी काइंड ऑफ फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये अपने सारे आसपास के स्ट्रक्चर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है. सो ट्यूब्स पे पीछे जाके स्टक हो जाती है, ओवरीज स्टक हो जाती हैं यूट्रस के पीछे जाके, और whole anatomy is disturbed. Intestines are also pulled towards uterus. They also
are stuck to the back side of the uterus. So it becomes like एक गुच्छा सा बना देते हैं, जिससे कि anatomy disturb होने से अगर एग बन भी जाए तो वो एग ट्यूब्स पिक नहीं कर पाती, और वो पिक ना करने से एक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी आ जाता है, विच इज रिलेटेड टू, यू कैन से, ट्यूबल फैक्टर. ट्यूब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो these type of patients have both tubal as well as ovulation defect. Or now coming to the second part which is related to the tubes, that is tubal factor जिसको हम बोलते हैं. उसमें ट्यूब्स दो तरह से इन्वॉल्व होती हैं. कुछ पेशेंट्स को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने से ट्यूब्स ही swollen होती हैं, inflamed होती हैं, and they are diseased tubes which are not able to pick up the eggs, or even if they pick up, they don't transport the egg to the uterus. So they are defective, और infection की वजह से वो फ्लूइड जो ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्टिव फ्लूइड होता है, दे ट्रांसफर टू द यूट्रस, और यूट्रस में भी थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है. So these type of tubes are not good tubes for fertilization. सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूब्स जो रहती हैं, उसमें कभी ना कभी पेशेंट को बिकॉज ऑफ सर्टन डिजीज और अदरवाइज कभी स्पैज्म आ गया, तो ट्यूब्स के अंदर जहाँ पे ये ट्यूब्स अटैच होती हैं टू द यूट्रस, अटैचमेंट ऑफ ट्यूब्स टू द यूट्रस, जिसको हम कॉर्नुअल एंड बोलते हैं, वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है. दिस ब्लॉकेज कैन बी बिकॉज ऑफ म्यूकस प्लग्स, or because of previous tuberculosis. Sometimes these cornual ends are blocked, or sometimes these are just the spasm. These tubes are blocked and they are not able to transport the fertilized egg to the uterus. So this blockage of tubes can be just at the beginning of the tubes, or this blockage can be at the distal end, that is towards the ovary, the end which is towards the ovary. Two type of blockages are there. So blockage of tube is another factor which is very important factor in the which plays an important role in fertility, and if it is not a good healthy tube, so patient is not able to conceive. The third factor which is plays a great role is the uterus. So एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए एक अच्छी यूट्रस का होना भी बहुत जरूरी है. यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि यूट्रस जो प्रेग्नेंट एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, वो आके इम्प्लांट कर सके. उसकी लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, कैविटी अच्छी होनी चाहिए, कैविटी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. सो कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके यूट्रस में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बाय बर्थ ओनली, जैसे कि ये यूट्रस की वॉल्स रहती हैं और ये यूट्रस की रूफ रहती है ऊपर. सो कुछ पेशेंट्स को कुछ बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं यूट्रस के अंदर, जैसे कि वो रूफ टिप कर जाती है टुवर्ड्स द कैविटी, और उसमें से कई बार पार्टीशन बन जाता है. कंप्लीट पार्टीशन भी हो सकता है, कभी कभी हाफ पार्टीशन हो जाता है, तो कैविटी में वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करती हैं और पेशेंट कंसीव नहीं करता. अगर कंसीव करता है तो मिसकैरेजेस हो सकती है. उसको हम सेप्टम बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेप्टम और कंप्लीट सेप्टम. और समटाइम्स मेजर मालफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं बाय बर्थ, जिसमें कि यूट्रस दो डबल यूट्रस रहता है. कई बार एक यूट्रस की कैविटी एक दो पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, जिसमें एक पार्ट में कैविटी नहीं होती और दूसरी पार्ट की कैविटी बहुत छोटी होती है. कई बार टी शेप यूट्रस होते हैं, जिसमें कि टी शेप कैविटी रहती है, जिसमें कि कैविटी का स्पेस अंदर बहुत कम होता है, which is not capable of carrying the pregnancy. So these are some of the factors which are there in the uterus and they are present by birth. And other factors which interfere with the pregnancy, there can be some obstruction in the uterus in the form of endometrial polyps रहते हैं, कईयों के fibroid polyp है, which interfere with the implantation. और कुछ पेशेंट्स के बहुत सारे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होती हैं, या टुवर्ड्स द कैविटी फाइब्रॉइड्स रहते हैं, जो कि कैविटी की सारी स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देते हैं, एंड patient is not able to conceive because of those multiple fibroids. So these are some of the very important factors which play a role in fertility. Now I will discuss how to tackle with these problems one by one and in relation to fertility enhancing surgery.
Now coming to fertility enhancing surgeries, what are these surgeries? These type of surgery are basically minimally excessive invasive surgery, which are endoscopic surgery. This can be laparoscopic surgery or this can be hysteroscopic surgery, which help in not only improving the fertility, they also help in diagnosing where is the fault in the female, which is hampering the fertility. So these are diagnostic as well as therapeutic. Therapeutic माने कि इससे जहाँ पे defect हम कर रहे हैं, if we can treat that defect in the same sitting, then it becomes the therapeutic. So coming to first, we will take up polycystic ovarian disease. जैसे कि मैंने बताया already, I have told that polycystic ovarian disease में there is defective ovulation, egg proper नहीं बन रहा होता, and despite sometimes all these lifestyle changes and weight reduction and medical treatments, patient is not ovulating properly. So last option remains the surgical option, and that is by minimal access surgery, laparoscopic surgery हम इसको बोलते हैं laparoscopic ovarian drilling. So इसमें हम क्या करते हैं, इसमें during laparoscopy we introduce a telescope in the abdomen, and which is attached to the camera and a monitor, and on monitor we can see the inside images also. This procedure is known as diagnostic laparoscopy. And इसमें हम देखते हैं कि वैसे तो हम सारा ही असेस करते हैं कि यूट्रस कैसा है, ट्यूब्स कैसी हैं, ट्यूब्स की टेस्टिंग करते हैं बाय डाई टेस्ट, but during ovarian drilling we see the ovaries directly under the vision and magnified vision. In the laparoscopy there is always magnified vision, so we assess the ovaries, how the volume is, and this is done after prior doing all hormonal studies and all. If we find that these hormones are disturbed, and this is fit case for laparoscopic ovarian drilling and patient is not conceiving. So इसमें हम हमारे पास एक ओवेरियन नीडल रहती है, ड्रिलिंग नीडल रहती है, उससे हम ओवरी में 3-4 होल्स कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं. 4 ड्रिल्स वी पुट द 4 होल्स इन द ओवरी, एंड उससे थोड़ा फ्लूइड निकल जाता है, एंड देन ओवरीज का वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड दे स्टार्ट ओवुलेटिंग नेचुरली. So this is how we do the laparoscopic ovarian drilling. और इसके बाद next cycle onwards we try कि patient को एक natural cycle में conceive करना शुरू कर दे, and simultaneously we assess other uterus की cavity also. Through hysteroscope we see the cavity and we test the tubes, and we see other factors also not operating in the same patient. So next comes the endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियोटिक अगर सिस्ट हैं, चॉकलेट सिस्ट हैं ओवरीज में, उनको लाप्रोस्कोपिकली दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड treating the endometriosis. Laparoscopy is the gold standard. So laparoscopic surgery से हम पहले diagnose करते हैं कि stage क्या है endometriosis की, कि ovaries में ही chocolate cyst है या उसमें और adhesions बनने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे से मतलब स्ट्रक्चर स्टक तो नहीं करे हुए, ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस. सो वी डू द स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. अगर ओवरीज के अंदर चॉकलेट सिस्ट हैं तो उनको लाप्रोस्कोपिकली वी रिमूव द ड्रेन द फ्लूइड, एंड देन सिस्ट वॉल जो होता है चॉकलेट सिस्ट का, वी रिमूव दैट सिस्ट वॉल सो दैट बाद में दोबारा वो सिस्ट फिल ना हो जाए. So उनको हम रिलीज करते हैं, चॉकलेट सिस्ट और ओवरीज को वी रिलीज फ्रॉम द बैक ऑफ द यूट्रस, ट्यूब्स आर रिलीज फ्रॉम the ovaries, and इसमें हम main purpose is not only to remove chocolate cyst and restoration of ovulation, but also to restore the anatomy of the female genitalia. Once the anatomy is restored, तो उसका डबल बेनिफिट होता है एंडोमेट्रियोसिस में. तो ओवुलेशन बेटर होने लग जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ चॉकलेट सिस्ट. और दूसरी बात है कि जो ओवरी सारा स्ट्रक्चर डिफॉर्म हुआ होता है, वो जब एनाटमी रिस्टोर हो जाती है, तो ओवुलेशन के दौरान ट्यूब्स प्रॉपरली एग्स को पिकअप करने लग जाती हैं, एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ एग्स गेटिंग फर्टिलाइज्ड. So this is how this laparoscopic surgery enhances the fertility in endometriosis. Next comes the tubal blockage.
ट्यूबल ब्लॉकेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ट्यूबल ब्लॉक एकदम स्टार्टिंग पे भी हो सकता है और टुवर्ड्स द ओवरी जो ट्यूब का पार्ट होता है उस पे भी हो सकता है. सो इसमें हमारा प्रोसीजर रहता है कि हम वी पुट द हिस्टोस्कोप थ्रू वेजाइना into through the cervix into the uterus. हम यूट्रस के अंदर जाते हैं, कैविटी असेस करती हैं एंड simultaneously we put the laparoscope through the abdomen and we see कि ट्यूब्स में हम डाई डालते हैं यूट्रस के थ्रू एंड वी सी कि कहाँ पे ब्लॉकेज है. अगर ट्यूब्स फिल होना शुरू होगी और एंड पार्ट पे आके दे डाई इज नॉट कमिंग, इट मीन्स कि टर्मिनल एंड पे ट्यूब के टुवर्ड्स द ओवरी ब्लॉकेज है. If dye doesn't enter the tube at all, it means starting portion पे ही ब्लॉकेज है एंड इसको हम कॉर्नुअल एंड बोलते हैं, स्टार्टिंग पोर्शन को कॉर्नुअल एंड पे. सो इसमें अगर कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉकेज है तो थ्रू हिस्टोस्कोप वी गो एंड वी हैव ट्यूबल कैनुलेशन सेट्स एंड थ्रू दैट सेट वी इंसर्ट दैट ट्यूबल कैनुलेशन सेट थ्रू हिस्टोस्कोप इनटू द ट्यूब एंड ट्यूब का जो ब्लॉकेज वाला पार्ट है वो हम खोल देते हैं एंड देन वी अगेन पुट द इंस्टिल द डाई and if the dye starts coming freely, it means the block is opened. So this is how it helps. And if the blockage is on the terminal part near the fimbrial end जिसको हम बोलते हैं, अगर फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉकेज है तो हम थ्रू लैप्रोस्कोपिकली हम अपने इंस्ट्रूमेंट से वी पुट द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द ट्यूब एंड वी ओपन द ब्लॉक एंड वी अगेन पुट द डाई एंड सी the tube is open or not. So ये procedure काफी helpful रहता है. This is very satisfying procedure if it is done properly and within 2-3 months only patient come with the pregnancy if the tubes are opened up. So these fertility enhancing surgeries, whether it is for PCOD, endometriosis or tubal blockage, if it is done properly, they enhance the chances of fertility. And they and patient can avoid IVF, which is a little tougher procedure and it involves a lot of money. So this procedure, simple procedures can help the patient in restoration of fertility. नेक्स्ट कम्स द यूट्राइन फैक्टर्स. यूट्राइन फैक्टर्स में जैसे सबसे कॉमन रहते हैं कि सेप्टम है पेशेंट के इनकम्प्लीट या कंप्लीट सेप्टम, यूट्रस की कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुई होती है एंड पेशेंट्स आर नॉट कंसीविंग. सो इन दोज केसेस पहले हम डायग्नोज करते हैं क्योंकि अगर वो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज है, समटाइम these type of septums are missed on ultrasound, but if ultrasound is a 3D transvaginal ultrasound by a good sonologist, obviously they are diagnosed by ultrasonography and then we confirm whether there is septum or not by doing hysteroscopy. Or hysteroscopy में once we have diagnosed, then we cut the septum. इसको हम थ्रू हिस्टोस्कोपी थ्रू वेजाइना ही यूट्रस के अंदर एंटर करके टेलीस्कोप के थ्रू एंड वी सी द सेप्टम एंड वी कट द सेप्टम. और सेप्टम को हम टिल वी रीच द inside the roof of uterus, we cut that septum. And this surgery is also very result oriented surgery. Once the septum is removed and the septum is the only factor which is hampering the fertility, that gives very good result for restoration of fertility. Another things are that some patients have polyps, some have fibroids in the cavity. So fibroids also they hamper the fertility through implantation of fertilized egg, that is embryo. So in those cases we remove the fibroids hysteroscopically, myomectomy जिसको बोलते हैं. तो through vagina only, through cervix only we enter and resect the fibroids which are inside the cavity. बिकॉज ये फाइब्रॉइड जो कैविटी में रहते हैं ये कैविटी की सारी अनेटमी को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्लस इसके ऊपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता. पेशेंट अगर इम्प्लांट होता है तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जाती है, सो इम्प्लांटेशन इज फेल्ड. सो आफ्टर रिमूविंग दिस सब म्यूकस मायमास बोलते हैं जो कि कैविटी के अंदर होते हैं, सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स जो हम रिमूव करते हैं, इसके बाद chances of fertility, chances of pregnancy are really increased. And
पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आफ्टर मायोमेक्टमी. Even up to 30 to 40% of females they conceive after removal of fibroids from the cavity. So these are some of the things, and other things can be small polyps are there, they can be removed histoscopically. So all these factors they which are troubling the couple, and they are hampering the fertility. And ये हम छोटी छोटी सर्जरीज करने से इनका हम हल निकाल सकते हैं. And these all surgeries are minimally invasive, they are done through small cuts, and they are daycare surgeries. Patient is, though these surgeries are done under general anesthesia, but patient can be discharged on the same day after getting these surgeries done. So these are not very big surgeries, and but results are very good. So this is how we help the infertile couple in by doing these all fertility enhancing surgeries. Thank you. Any questions? You're most welcome. Thank you.